प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास विमेन प्रायोजक, श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार संचालित हो रही हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहाँ तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े चर्चित और कई बार नए लेखकों, कलाकारों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि आज कलम चंडीगढ़ के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक, संपादक और लेखक राहुल रवैल जी। राहुल जी ने प्रख्यात निर्माता निर्देशक राज कपूर के सहयोगी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और लव स्टोरी, बेताब, अर्जुन, डकैत, अंजाम और अर्जुन पंडित जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया। आपने कुमार गौरव और विजेता पंडित को लव स्टोरी में, सनी देओल और अमृता सिंह को बेताब में, परेश रावल को अर्जुन पंडित में, काजोल को बेखुदी में तथा ऐश्वर्या राय को और प्यार हो गया में बड़े पर्दे पर इंट्रोड्यूस किया। आपने 17 फिल्मों को और 2 टेलीविजन सीरीज का भी निर्देशन किया है। निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राहुल रवैल जी द्वारा महान फिल्मकार स्वर्गीय राज कपूर पर लिखी गई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया था। कलम चंडीगढ़ के इस सत्र में हम रवैल जी से उनके जीवन और इस किताब पर चर्चा का आनंद लेंगे। तो अब मैं और अधिक समय न लेते हुए राहुल रवैल जी से संवाद करती हूँ। एहसास वुमन लुधियाना दीपिका भल्ला को आमंत्रित करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यू कैन सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच। आज बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ हैं। The honor is mine to see this wonderful people here to hear what I'm going to talk about. Most of it is going to be nonsense, शायद बकवास ही होगा, तो please humor me और नहीं, बकवास बिल्कुल नहीं हो सकती। राहुल जी, आपकी किताब इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, ईमानदार, सच्ची किताब जो मैंने आज तक पढ़ी है। He has been very upfront about जो भी ऊंच नीच जिंदगी में जो भी आपकी फीलिंग्स थी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसको उसमें प्रेजेंट किया है एंड बहुत प्रेरणादायक किताब थी। इसके बाद मुझे लगा कि आपने इतना कुछ देखे भी, यू वर देयर एंड स्टैंडिंग एंड लर्निंग, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक किताब थी। तो शुरू करें ना। सबसे पहले आप बताइए आपकी चिंटू जी से दोस्ती। आई नो यू बीन आस्क्ड दिस, बहुत बार पूछा गया आपसे ये सवाल, पर जब आप नीचे बता रहे थे प्रेस को कि मतलब किस तरह की अमेजिंग दोस्ती थी आप लोगों की, सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं। देखिए, उनकी फैमिली के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छे थे कि मेरे फादर भी फिल्म मेकर थे, तो घर पर आना जाना था जब बहुत छोटे थे। फिर स्कूल में हम नर्सरी स्कूल में एक स्कूल में गए एंड फ्रॉम देयर वी वर टुगेदर 4th स्टैंडर्ड तक। फिर वो स्कूल अलग हो गए, वो अलग स्कूल में चले गया, चिंटू मैं अलग स्कूल में आ गया, लेकिन एक कांटेक्ट बना रहा। और ये कांटेक्ट एक अजीब सा था क्योंकि जब तक चिंटू चले गया तो इस कांटेक्ट को 22 साल, 62 साल से ऊपर हो गए। इट इज अबाउट 62-63 ईयर्स एंड ऐसा कोई दिन नहीं था जब
हम लोग दुनिया में कहीं भी हो तो हमने बात नहीं की भाई, we would always speak to each other. सिर्फ तब नहीं करते थे जब झगड़ा होता था तो फिर बात नहीं करते थे, या तब भी बात करते थे तो एक तीसरे आदमी का जरिए कि तीसरे आदमी ने कहा कि राहुल यार चिंटू पूछा था क्या हाल है राहुल का, क्या कर रहा है, तो एक मीडिएटर, बट so this was part of life. So that was what happened with Chintu. Long. इस किताब में एक ईमानदारी है जो बहुत दिल को छू जाती है, लाइक वेरी ऑनेस्ट। आप जब मेरा नाम जोकर है कि शूटिंग के लिए गए थे, मुझे वो लाइक पार्ट इस बहुत ही पसंद था। प्लीज देखिए, मुझे पापा फिल्मों में थे, पापा प्रोमिनेंट फिल्म मेकर, उनको था कि माय सन शुड आल्सो बिकम फिल्म मेकर, लेकिन मुझे ये था नहीं कि मैं फिल्में बनाऊंगा। मुझे एक न्यूक्लियर फिजिक्स करना था, तो स्कूल में आई स्टडीड साइंस इन स्कूल, और स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज के लिए कनाडा जाने वाला था, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, और मेरी एडमिशन भी हो गई थी कनाडा में स्कूल में। लेकिन स्कूल जब खत्म हुआ कि मैं सीनियर केमिस्ट्री में था, और ये आखिरी साल था सीनियर केमिस्ट्री का, तो एग्ज़ाम खत्म होते थे दिसंबर में, और मैं 15 साल का था जब स्कूल खत्म हुआ मेरा। तो चिंटू का फ़ोन आ गया मेरे को वहाँ पर कि यार तू अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आजा, पापा शूटिंग शुरू कर रहे हैं सर्कस के पोर्शन की, मेरा नाम की, तो ये आज़ाद मैदान में, और वहाँ पर रशियन सर्कस वाले भी आए हैं, और वो सब लड़कियाँ भी आई हुई हैं। शूटिंग पे चले गया वहाँ पर, लेकिन ये था कि जब मैंने एंटर किया वो बिग टॉप के अंदर, तो राज साहब वहाँ पर थे। मैं शूटिंग बहुत देख चुका था, लेकिन जब मैंने राज साहब को देखा, उनका प्रेजेंस एक अलग ही ऑरा था उसका। एक आदमी कुछ 5000 आदमियों को मैनेज कर रहा है, उनका अपना क्रू, सर्कस का क्राउड जो है वो सर्कस के आर्टिस्ट, रशियन आर्टिस्ट, 5000 people, and one man alone is handling the whole thing. He was more like a music symphony conductor who was standing alone and he knew what he was doing. मैं उनको पूरा ये था कि ये ही चाहिए, तो वो देख के मैं बहुत इनामर हो गया। The whole day I was only watching him. I wish I was a girl. It's too late now. So it finished that day, and I went home. I was very. It was in my mind what I saw. फिर अगले दिन सुबह मैं खुद चले गया, मुझे बुलाया नहीं था किसी ने, मैं खुद चले गया, and I went again and again, and after a week I told my mother, I said I'm going to be here for 6 months because I go to Canada for 6 months. तो मैंने कहा इसलिए कोई काम वाम तो है नहीं, तो I might as well go and join राजा। तो पापा said ठीक है, I will talk to him. My father went and spoke to him, and he said since the day I saw him coming here, I saw him coming with Chintu, and he's been coming every day. I know that. He comes at 7 in the morning. I come later. He comes every day, and he's most welcome to join me. But let me tell you one thing. इस इंडस्ट्री में जो आदमी आ गया वो वापस नहीं जाता। तो तुम स्कूल का देखो, if you want to go back, but you'll not go. I'm telling you. And I guess you were right. I forgot my physics. Now I sometimes wonder what physics means, and it's just happened that I happened to stay here. पर राज साहब ने सिर्फ ये नहीं नोटिस किया था कि आप 7 बजे आते, वो और भी बहुत कुछ नोटिस करते थे, खूब शरारती भी थे। नहीं, उनके साथ में कभी नहीं। I was so scared of him. मैं इतना डरता था उनसे, I was very scared of him. पर उन्होंने तो आप पे प्रैंक प्ले किया था, मेरा नाम वो प्रैंक प्ले करते सकते थे, वो उनकी ये थी। He was एक तो
it was very rare कि मैं because I have never seen a man who had no sense of humor. I mean, he was horribly strict. He had no sense. You never knew what he'd say. But then when he wanted to play a prank, he'd play a prank. When you like, he with me. We were shooting the circus, and we were shooting on the trapeze, जो ऊपर पोर्शन है, and उन्होंने बोला कि बात करते करते कि Rahul go up, climb this and go up. I said, you want me to climb and go up to the trapeze? I mean, this is madness, and I couldn't say no. And he saw me. He said, "You're scared." I said, "Yeah, I'm either मैं करके दिखाऊँ," and he went up himself. So he took 2 steps. I said, "No, I'll do it." And I started climbing. I was so scared. I said, "I'm going to die." And of course, went up and then he called me back down. He was laughing, and this is a prank. So this is a prank he used to play. But somewhere I even feel that what were pranks for him were part of the training which he wanted you to put. That's what he wanted you to really go through. क्योंकि वो चाहते थे कि डायरेक्टर वो हमेशा मुझसे कहते थे कि डायरेक्टर जब काम करता है तो तुम कभी एक्टर को बोलोगे कि ये काम करना है, तो इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अगर एक्टर ने कहा मेरे से नहीं होता है तो तुमको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि तुमने अगर कुछ सोचा है, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, सो यू शुड बी एबल टू डू इट. एंड सो आई थिंक समवेयर दैट रियली हेल्प मी इन अ बिग वे. मैंने अपनी किताब में मेंशन किया अगेन एंड अगेन जितनी वो इम्पोर्टेंस देते थे लोकेशन को, और मैंने ये भी पढ़ा, आपने लिखा था कि हवा में उड़ता जाए वाज द फर्स्ट सॉन्ग टू बी शॉट इन कश्मीर. तो उन्होंने मतलब आने वाले कितने डायरेक्टर्स और कितनी मूवीज के लिए एक बहुत अमेजिंग लोकेशन का दरवाजा खोल दिया था कश्मीर. देखिए, कश्मीर में तभी कोई शूटिंग करता नहीं था, इट वाज वेरी फार अवे. The infrastructure of travel was also not there. There were only flights which were the Indian Air Force flights, which would take you to Kashmir, and there was no equipment available there. तो उन्होंने कैमरा खरीदा खास इसके लिए, it's called an IMO कैमरा. तो उन्होंने खरीदा इसके लिए, और वो और जाल मिस्त्री was the camera, और वो गाना शूट हुआ था इन पे निमी जी पे. तो वो निमी जी उन्हें लेके गए थे, उन्होंने वहीं से कोई लड़की सिर्फ लॉन्ग शॉट्स के लिए उन्होंने ये किया था, एंड ही वेंट देयर एंड शॉट दोस ओनली लॉन्ग शॉट्स, क्योंकि ही वांटेड अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल प्लेस. So he was the first man to go and shoot in Kashmir, and then other people came up and did it. आपने बहुत विस्तार से किताब में ये भी बताया कि कैसे उनके सेट्स कुछ भी उनके दिमाग में सेट हो जाता था, जैसे कोई फ्रेंच पेंटिंग से इंस्पायर्ड थे और पूरे हाथ से पेंट होते थे, हाथ से बनते थे बैकड्रॉप्स भी. Yes. मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, टुडे वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बस एक बार एक कमांड देनी है और सेट्स के बैकड्रॉप्स और सब बन रहे हैं. In that, and you've seen sets being painted by hand. क्या फर्क है कलाकारी का और पिक्चराइजेशन का, आपको लगता है? Those were wonderful days. I really think you made film that way because you were taking artificial stuff and portraying it as real. So that to do that was a different. एक कला अलग थी of doing that. So राज साहब को बहुत ये था कि बैकग्राउंड मेरा सही लगना चाहिए, लेकिन उस जमाने में था नहीं. पहले जैसे हमने बॉबी का सेट लगाया था, तो प्रेरणा जी का जो घर का एरिया था, तो वहाँ पर वेव्स सेट पे, तो वो लकड़ी के बनवा के वो आदमी पीछे को टर्न करते रहते थे. Yeah, but it was shot in such a way you don't even realize it. See, उनका कहना एक चीज़ होता था बहुत सही था कि अगर आपका कंटेंट सही हो
अगर आदमी सीन देखता है और कंटेंट सही है, उसको और कुछ चीज़ याद नहीं देगा, वो कभी नहीं सोचेगा कोई और चीज़ की। वो तो ऐसे भी करते हैं, एडिटिंग में कभी किसी एक्टर की ज़रूरत है क्लोजअप की जो हमने शूटिंग में नहीं लिया हो, तो कहते थे एक काम करो, इसका कोई भी क्लोजअप कोई भी कपड़ों में कोई भी लोकेशन में मुझे दे दो बस। दैट्स एंड ही वुड डू दैट बिकॉज ही बिलीव स्ट्रांगली इन दिस एंड आई डिड द सेम थिंग अर्जुन, आई डिड एंड ही इज राइट, नोबडी विल रियलाइज इट। एक और चीज़ वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी आप फिल्म बनाएंगे और जो प्रिंसिपल एक्टर्स हो, तुम्हारा कोई शॉट आएगा जिसमें वो प्रिंसिपल एक्टर की ज़रूरत नहीं है, बट ही इज एट अ पोजिशन वेयर समझिए यहाँ और यहाँ बैठे हैं और अब शॉट लेने में इनका कोई काम है नहीं, रिमूव हिम फ्रॉम देयर। So I said to remove him, so how do you do that? Because the last shot he was there. He said, nobody will remember you, he said. As long as, again, the content is interesting, because at that time, they'll only want to see what is the principal characteristic. अगर ये आदमी रहा शॉट के अंदर, तो हमेशा उनको ये रहेगा कि ये कब बोलने वाला है, और वो नहीं बोलेगा, and that becomes disappointing. So these are lessons which he taught us. बट उनकी क्वर्कीनेस के अलावा भी, वो इतने क्वर्की इंसान थे, बट फिर भी उनके साथ जितने भी इंसान जुड़े, आप इतने साल उनके साथ रहे, और उनके कैमरामैन राघु साहब जी एंड ओम प्रकाश टीवी, दे वर ऑल वेरी ऑनेस्ट, सब ईमानदार। और मेरे को दैट होल सेगमेंट जहाँ आपने मेंशन किया कैसे ओम प्रकाश जी सबसे पहले आके खुद अपने आप को पे करते थे, रोज सुबह आके अपना अकाउंट बुक खोल के सेल्फ 500 रुपये लिखते थे। तो मैंने कहा उनके हम ये सेल्फ 500 रुपये लिखते हैं और ये रास्ता को जाता है वो देखते हैं। हाँ। बोले मैंने तो उनको बोला है कि देखो आप सैलरी इतनी कम देते हैं तो या तो मैं 500 रुपये रोज दूंगा या मैं शूटिंग में पैसा खा जाऊंगा यहाँ से। तो आप बताइए, देखिए शूटिंग में पैसे खाना ना इज वेरी इजी, आई टेल यू आई हैंडल प्रोडक्शन आल्सो। तो मैं पैसा तो नहीं खाता लेकिन इन अ वे खाता भी था, जैसे सिगरेट के खरीदते थे स्मोक इन दोस डेज, तो वो प्रोडक्शन निकलता वाज बेटर यू नो, सो दैट वाज कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन। सो ये था उनका, ही हैड वेरी ऑनेस्ट पीपल एंड क्वर्कीनेस में कि आपने बात की तो ही वाज वेरी क्वर्की। इट वाज अमेजिंग दैट दिस इज द फिल्म मेकर एंड हिज क्वर्कीनेस वाज there's crazy stories about his quirkiness. एक हमारे यहाँ काम करते थे रामन साहब करके आरके में, ही वॉज दी फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो रमन साहब डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उन्होंने आरके की फिल्म रिलीज की, बॉबी बहुत बड़ी हिट हुई। रमन साहब की डेथ हो गई थी, उनका बेटा था। अब उन्होंने प्रॉफिट जो था रामू थलर का, वो प्रॉफिट नहीं दिया था राजा, वो पूछते रहते थे प्रॉफिट, हाँ टुमारो डे आफ्टर। एक दिन रात को टाउन से आ रहे थे हम लोग, तो ही हैड 2 ड्रिंक्स है, तो एकदम से उन्होंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रमन साहब के आना। इन द मिडल ऑफ द नाइट वी वेंट टू रमन साहब, एक गली के अंदर सुनसान जगह एकदम, वहाँ गए, सब वहाँ बत्तियाँ बनती और ये उतरे गाड़ी से और चिल्लाए जोर से रामू रामू एंड लाउड। तो gradually lights started coming on. People heard a man shouting, and when they came to the balconies, they saw Raj Kapoor. तो इतने में कुछ नीचे आ गया और रामू नीचे आ गया। अब रामू साउथ इंडियन था, तो रामू ने धोती पहनी हुई थी, which was folded up here, and बाकी नंगे बदन था और सर पे वो सिंदूर वो डपटा तिलक लगा हुआ। तो रामू को उन्होंने बोला कि मेरा ओवरफ्लो टाइम होगा। अब ये रात के कुछ 12:30-1 बजे इस तरह, और लोग कुछ 40 जमा हुए हैं। तो रामू ने कहा मेरे पास है। बोले तुम्हारे पास क्यों है? मेरे पास होना चाहिए। तो बोले हाँ दे दूँगा आपको। बोले कब दोगे? बोले जल्दी दूंगा। बोले जल्दी नहीं, मुझे बताओ, डेट बताओ कब दोगे। तो रामू थोड़ा घबरा गया था, तो लोग भी देखे ये कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है। तो रामू ने कहा अच्छा भी चिल्लाओ मत, तो कल दे दूंगा। तो राज साहब ने देखा रामू की तरफ और एक झटके में उन्होंने रामू की लुंगी खींच दी। रामू वाज लेफ्ट
stark naked in front of his neighbors, stark naked, not wearing a single piece of cloth. And Rahul said, I couldn't stop laughing. And Rahul sat in his car and told Ramu, कल स्टूडियो में पैसे दे जाओ और लुंगी को रिटायरमेंट में हो. This was his quirkiness. You know, these were things which we never expected that he did. It was really strange. 12:30 at night, seeing a grown-up man naked on the street. What's happening? You know, this you would do these things and वो अपने काम के लिए he would do anything as long as everything was linked to his work. And we were shooting Mirram Joker and we had this thing in RK कि जितनी फिल्में उन्होंने बनाई थी from आग till Bobby and later on also उन सब के costumes थे स्टूडियो में. We had huge costume department. तो कभी गाने में होता था कि किसी कॉस्ट्यूम चाहिए या किसी सीन में तो पुरानी पिक्चर का एक कॉस्ट्यूम निकाल के दे दो, उसको रिसाइकल. तो हम शूटिंग करते थे, मेरा नाम जोकर किया एंड ये गाना था जीना यहाँ बनना यहाँ जो क्लाइमैक्स में था. तो उसमें सर्कस का सेट लगा था एंड गर्ल्स वर गोइंग अराउंड द बिग टॉप एंड नीचे कैमरा रखा हुआ था. And Ratha was looking at a rehearsal, couple of angles, so he had to be really down. And the music started and the girls started going around. Suddenly he screamed, Lakshman, he was our costume man. Suddenly he screamed, Lakshman, we stopped. He said, वो लड़की को चड्डी बना के लाओ. So, this one, I told him, I said, sir, you could have called her and told her. He said, what about my time meeting basis? मैं बुलाऊंगा, बोलूंगा. I don't have time. I need to do this thing. So, पर पूरी किताब में इस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दैट जलेबी सैंडविच. वो खाने के लिए तो मतलब he was crazy about eating. So, when we worked and जब editing होती थी तो पहले 2-2.5 घंटे जाते थे जब सब मिलके फैसला करते थे कि आज दिन में खाएंगे क्या. तो लंच में शाम को और स्नैक फिर रात को डिनर. तो जिसने जो भी सजेस्ट किया, किसी ने कहा कि पुरानी जगह दाल बहुत अच्छी मिलती है, फिर द अदर साइड ऑफ टाउन ये अच्छी मिलती है. तो गाड़ियाँ जाती थी अलग टू पिक अप ऑल दैट फूड टू ब्रिंग फॉर अस टू ईट. अच्छा, उनका एक अजीब ये था कि वो रेसकोर्स जाते थे, जुआ कभी नहीं करते थे. उनका ये कि बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ और जैसे रेस शुरू होने वाली लोग उठते थे अपने बेट लगाने के लिए और वो सैंडविच मंगवाते थे. तो सैंडविच जो पड़े होते थे, ही वुड पिक अप द सैंडविचेस और उनके बीच का जो भी वो चिकन है वो खा के वापस लगा के. व्हाई ही डिड दैट वी डोंट नो, बट ही डिड दैट. दैट हैज हैपेंड वंस इन द एडिटिंग. He was sitting there eating में शाम को नाश्ता लगता था सबका. तो बैठे थे तो उन्होंने एक जलेबी दी और जलेबी को देखा और एक पाव जो बॉम्बे में वो ब्रेड होता है सेला का बन, और वो बोल के उस पर मक्खन लगा के उन्होंने जलेबी उसके बीच में डाली एंड ही स्टार्टेड ईटिंग दैट. I said, sir, how can you eat this? He said, क्यों कहीं लिखा नहीं खा सकते? I said, नहीं, लेकिन जलेबी और पाव, he said there's a better way to eat it. Believe me, he dipped it in tomato ketchup. And then he ate the whole thing. So he would do anything in this kind. Very fond of eating. जब नेचुरल थेरेपी के लिए भी गए हैं वहाँ पे भी. He put on weight. He went to nature clinic और माँ बोले रात शाम Scott to lose his weight. तो मैंने बोला एक दिन let me go and see him. So I went to this place called Urli Kanchan and it was very depressing. It was not very depressing. There were TB patients, all guys walking around there. So I went in there and the end in a small cottage he was there. And he sat there and he said, you want to have something to eat? I said, sir, I'm not eating. मैं सुना यहाँ पर एक
पूरे दिन में एक वो भी देते हैं खाने के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगा। वो अच्छा बैठ के चलता है। फिर बोले कि चलो लंच मैंने मंगवाया, तो एक साइकिल आई, साइकिल पर सम विलेजर हो जाए, वो इस पर लपेटी हुई थी ये पैकेट करके अपने न्यूज़पेपर में। तो वो आदमी ने और उनके कॉटेज के बाद जब खोला उन्होंने, तो पूरा चाइनीज खाना मंगवाया था। No, he's come to a nature clinic. He's come to lose weight. And he finally left after 1 month. He had put on 6 kilos. Nothing else. So that is what it was. But he was a genius as far as work went. You know, as far as work went, there was nobody like him. Nobody. And anything जो म्यूजिक का उनका था, जब उन्होंने जो म्यूजिक का सेंस था, was tremendous. When I joined him, तो पहली बार मैं म्यूजिक के एक सेटिंग में गया जहाँ पर गाना बनाते थे, तो म्यूजिक रूम में गए, तो वहाँ पर for me it was a huge shock, because in one room I saw Raj Kapoor, Shankar, Jaikishan, Mukesh ji, Shailendra ji, and Asra Jagpuri. Now these were 5 of the biggest names of music sitting together, and they were making a song. जब गाना हर गाना जब बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर जब ट्यून सुनाता आपको, तो उसमें वो डमी वर्ड्स डालते थे. They don't mean anything. Sometimes डमी वर्ड्स are very good. They use in the film. जैसे मेरी फिल्म में था, मैं आई आता. Now आई आता, वो डमी वर्ड्स है पंचमी यूज. But we retained the film. But डमी वर्ड्स are necessary because you can understand the song better. तो जब शंकर जी ने गाना गाना शुरू किया, I did not know whether I should jump out the window. What do I do? Because he started singing the song with the choicest foul language I've ever heard. Till today I've never heard that kind of language. मतलब गालियाँ इतनी गाली कि मेरे को समझ नहीं आया कि और वो सुना, बाकी सब लोग बहुत सीरियसली सुन रहे, वो रिएक्शन और वो खत्म हुआ उनका, बड़े ट्यून कैसे लगी, तो किसी ने कहा कि वो जो माँ थी है उसको बैन की है करने. I said, what is wrong with these people? These are insane people. They're geniuses. But that's the way they were, because they were not worried at that time with the words. It was just the tunes which was. और इतना इंटरेस्टिंग पूरा वो एपिसोड है जहाँ पे अब लौट चले, जिस देश में गंगा बहती है, उसका पूरा सीक्वेंस सॉन्ग का कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा कैसे अकोमोडेट करके. Accommodating an orchestra at that time, म्यूजिक रूम छोटे थे, रिकॉर्डिंग भी अलग हो गई थी, तो 50-60 आदमी का जगह थी. He wanted an orchestra of 150 people. You know, he wanted 80 violins. Now, there was no recording studio which hold that. So they decided to record at 3 o'clock in the morning with half the orchestra in the studio and half sitting on the road. So that's the only place they could accommodate all of them. And that road was a main road, luckily there was no traffic at that time. And they rehearsed it and all. And then at 1:30 at night, he just called up Lata Bai. Lata Bai's great grandmother. And said, please come over here, I need you for the song. She was not in the song. And she came. और उन्होंने कहा कि देखो, मुझे ये लगा ये गाना सोच था, ये गाने में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो दिस सॉन्ग विल नॉट वर्क. तो लता बाई also sat on the road and they recorded that song at 3 o'clock in the morning, big hit, जो उसका जिस देश में गंगा बहती का टाइटल गाना था. Lord that was the song. So he would go through any lengths for as far as his music went. He had tremendous sense of music. He could see an instrument and start playing it without knowing what's about. And जब शूटिंग करते थे तो मैं दिखता था, because I wanted to learn. I used to look at him a lot, apart from looking at the shot. And at times I used to see him, कि जैसे
एक्टर डायलॉग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनकी उंगलियां चलती रहती थी. It was just his fingers. So after his first 3-4 times, I asked him, I said, I had a very good relationship with him, very close, and he was really very good. He would go out his way to explain to me क्या आता है. और मैंने से पूछा, ये आप उंगलियां, बोले बेटा देखो, जब सीन कर रहे हैं, मेरे को ड्रामेटिक सीन, I am mentally counting the music beats क्योंकि इस पे बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा. So I've got to see that the timing is correct, so it comes within the beat. So I'm counting the. So his thing went on till there for the music. He just went on completely to there, and he thought a lot of his visual thinking incorporated music. There would be portions like when I started working with him, I could not understand a lot of things. It's only जब editing room में गए, जब उन्होंने एडिट किया और वहाँ पर उन्होंने जब समझाया कि ये साइलेंट मैंने क्यों किया था, क्योंकि इस पर ऐसा म्यूजिक आएगा, इज व्हेन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट ऑल अबाउट. एंड हिज इंस्पिरेशन वुड कम फ्रॉम एनीवेयर. दिल्ली गए थे शादी पे, तो वहाँ पर ही अपना हिना के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, द ब्लाइंड, he was the wedding singer, संगीत पे. तो उन्होंने गाना सुना, I was there, and गाना खत्म हुआ, रास्ता उठे, रास्ता ने दिए थे 1000-2000 रुपये थे, निकाल के उनको दिए. उन्होंने कहा कि अगले पिक्चर में आज मेरा म्यूजिक दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे मैं म्यूजिक नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे मैं दे रहा हूँ स्टोरी के. वो समझ नहीं आया व्हाट ही मेंट. तो जब वहाँ से निकल गया है तो स्टूडियो के बोला, ये जो गाना है इसके ऊपर मैं बना रहा पिक्चर. आई थॉट अबाउट इट, आई गॉट द स्टोरी. दैट सॉन्ग वाज एक मीरा एक राधा, व्हिच हैज एंड ही हैड हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम द पुरानास. जो ये रामचरितमानस में जब राम जी गए थे जहाँ पर संगम है, वहाँ पर एक बोट में गए थे. तो वहाँ पर एक बोटमैन था, तो वो बोला उन्होंने कि वहाँ से गंगा आ रही थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, इतनी मैली है कि ये पवित्र क्यों इतनी. तो बोटमैन ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते. तो वो उनको याद था. He linked those two and made this film, which was his biggest success for him. That's how inspiration came to him, and he was very much on actors, how they would perform. Dimple का जब screen test किया था, none of us liked it. Even I, and he said. The problem is that you people are not liking it, and that's why you're not where I am. And I am the director. So, when he shot with her, she came across brilliantly. And but I've seen him shooting, because even if he wanted, जैसे कोई डायलॉग वो चाहते थे कि उसकी राइट उंगली यहाँ पर पड़े इस डायलॉग पे, he would shoot over and over again till that right finger reached that place, and she would say कि मेरे से नहीं हो रहा है, इनसे क्यों नहीं हो रहा है, sit down and what will happen. So that is how he believed in her, and it worked that way. He was somebody else. I wish there were more filmmakers like him. But in a way, I sometimes feel in today's time, when people are making films, the film we see, 70% of them are craps. Because nobody can understand what they made, because nobody knows what they're doing. If he was living today, he would have been a very unhappy man. He would have not been able to see this. जो गाने आजकल मेरे को तो समझ नहीं आता गाने क्या, सिंगिंग व्हाट, I can't understand what they do.
And the words with the right, the lyrics are really sad. पर राहुल जी, राज साहब जैसे शख्सियत का असिस्टेंट होना भी सरल नहीं था। कभी 3 दिन की अगर शेड्यूल है तो आपको प्रिपेयर 5 दिन का करना है, लास्ट मोमेंट पे ट्रेन पे जाना है, गाड़ी छोड़ के, बहुत ऐसे उनके हेड सोचना पड़ता है। अगर उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के जा रहे हैं तो we used to go prepared for at least 10 days. कि कपड़े साथ लेके जाते हैं 10 दिन, ये कब वापस आएंगे मुझे पता नहीं। तो you never know, you leave in मेरा जूता है जापानी, वो गाना शूट करने ये चेंबूर से पनवेल गए थे, which in those days was just 2 miles, कि जाएंगे शूटिंग करके वापस आएंगे और 32 दिन के बाद वापस आए थे। यूनिट में लेकर ऊटी पहुंच गए थे क्योंकि उनको क्राउड जो नहीं मिल रहे थे स्काई। See, black and white days, you had no colors, so the skies wanted clouds so that they gave a break. He couldn't find clouds and he reached Ooty till he shooting, and the unit go on for 1 day. So we had learned this, I'd heard about it, I was not there. So, but he did that one thing. He did in Bobby. We went for a schedule of 4 days and we shot for about 35 days. But that was not bad, तो अच्छे कपड़े आ जाते थे। और गानों का ये था, जब I joined in 68 तो ये मेरे को 2 गाने सुनाते थे। His daughter used to play the piano. So on Sundays she would sit on the piano and he would sit with her and they would compose songs. The father and daughter, they about 2-3 hours in a day, they would compose songs, and with the words, he used to write the words. तो उन्होंने 2 गाने सुनाए थे मेरे को, तो बोले ये 2 गाने से 1968 I remember distinctly. He said there are 2 songs I have to find a situation to use them. One was झूठ बोले कौवा काटे, which in 1968 he got to have Bobby, and the other was सुन साहिबा सुन प्यार की धुन. So Bobby में in 72 he used झूठ बोले कौवा काटे, and in 82 in Hina he used सुन साहिबा सुन. No, that's Ram Tera. He used. I'm sorry, my memory is a little. I've become too old, so stop saying he's so young when we met. But this was his whole. I know music. I tell you, another very funny incident with me, which was also connected with music and again a quirk of his, is one night I was sleeping and कुछ 3 बजे रात को मम्मी ने मुझे उठाया और कहा कि बाहर देखो रात साहब आए हैं. I stay in a gully in the. So I came out there 3 in the morning, and मेरा neighbor था वहाँ पर. So I said, was Raj Kapoor here? I said, yeah, I just saw him. He was here and then he went away in the car. So I said, ठीक है. जैसे ही said they went away, the car came back, and his driver was there. He was not there. तो मैंने कहा साहब कहाँ है? बोले साहब गुस्सा हो गए. बोले कि मैं को उतारो यहाँ पर, मैं बस से जाऊँगा. अच्छा बस से कहाँ जाएंगे 3 बजे? वो नहीं, वो उतर गए. अच्छा कहाँ छोड़ा तुमने? बोले बस स्टैंड में उतर गए. I went out. There's bus stand outside my house. So he was standing at the bus stand. I said, sir, what are you doing here? Natural question. I said, oh, what are you doing here? He said, what does one do at a bus stand? Wait for a bus. I said, yeah, but you're waiting for a bus? He said, yes, I'm going on by bus. I said, no bus will come before 5 in the morning. He said, I'll wait till 3. I said, children, sir, my car's there, I'll talk to you. So he picked up a stone and threw it at me. I just threw away. I said, let me take a scissor and come back. I came back and he was not at the bus stand. Now, I didn't know where he's gone to. So there was one chap sleeping there. तो
तो ऐसा वो आदमी था यहाँ पर, मैंने देखा उसको, वो टैक्सी में बैठ के इस तरफ गया, दैट वाज द रोड टू आरके। तो ऐसे चल रखी वो टैक्सी, because now worried because taxi, whom he is with, what is the kind of person. I went ahead and I saw a taxi. At that time, taxi drivers were allowed to have a companion with them. So he had got a taxi with a companion, and when I went close, the taxi driver was there, and the companion was there, and in between both of them, Raja was sitting with his arms around both of them. और एक का जो गमछा था वो उन्होंने अपने सर पे बांधा हुआ। खैर, I was driving behind, then I came slowly up to him, and he was singing Sun Sahiba Sun to those people. Now those people must have known what Sun Sahiba Sun is. He was singing Sun Sahiba Sun. So I said, I won't stop it now. He'll get angry. I followed them up to the studio, to his house, and I told the cab driver, sir, what is the money? I mean, they said, साहब राज कपूर बैठा हमारा साहब को पैसे नहीं चाहिए, और राज कपूर ने गाना सुना है हमको, पैसे कौन सी चीज़ से गाना सुना है, सब पता नहीं कौन राज कपूर ने गाना सुना है, ये होता है। Anyway, next morning he got me very sharp. He said, come home and have lunch. So I went home. He said, did I come to your house last night? I said, sir, you know you came to my house. You're just asking me, there's something else you want to ask me. So we started laughing. He said, "Nee, I know I came. And I know I went in a cab and you followed me. Did the cab drivers get paid?" I said, "Yes." He said, "Did they tell you how the song was?" Now, so he remembered that song. What he wanted was a reaction to the song. So this is the way he functioned, this is the way he functioned with friends. और ये आपने पूरा अच्छे से उनसे सीखा, चाहे लोकेशन को याद रखना था, चाहे वर्ड्स को याद रखना था, बिकॉज जब आप बेताब की लोकेशन की शूटिंग, वो फार्म कैसे आपको याद रहा कि आपने कभी वो देखी थी लोकेशन? बिल्कुल हाँ जी, they were all places which we've seen at that time. और देखिए ऐसी चीज़ें जो याद रह जाती हैं, it's normal sense. In this your work, you remember it. And he, even when I made love story, Betab, Arjun and Dakat, he was alive to them. तो उसमें उनका बहुत असर था मेरे पे, और मेरी फिल्मों के अंदर वो है भी कि असर उनका कहाँ कहाँ आया था. इनफैक्ट लव स्टोरी में तो लव स्टोरी इज द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड, only film which does not carry a director's name. A director's name. There is no director's name. और आपने उसके लिए मनी भी नहीं लिया था? नहीं, I didn't need money also. Picture complete हो गई थी. It was ready for release. मेरा कुछ रविंद्र कुमार के साथ some misunderstanding happened, and I said I don't want my name, and he was ready, very happy, because he wanted to give his own name as director. So I went to court, and I got a court order that he cannot use anybody else's name. So finally the film released without the name, and I had a lot of problems with it, a lot of problems. But the funny thing is, at that time, Raj Saab's daughter was engaged to Kumar Bhatt. They would get married. But Raj Saab at that time, when I started the love story, he told me, I'm not exaggerating, exactly what problem I will have with him. At every step he told me, अच्छा ये हुआ अब ये होगा, ये हुआ अब ये होगा, ये हुआ अब ये होगा, and everything he said was on the dot. And I said, sir, आपको स्टेशन देखो, I'm going very good. And I'm telling you, these are the problems. It all happened in his way. But for me, the crowning glory was on the day of the premiere. He asked me the day, he said, are you coming for the premiere or not? I said, I've not been invited. He said, you've not been invited?
I said, no, because they released exactly what I had made. So I said, he's not invited me. So he started laughing. Okay, premiere khatam hua, I was, it was very upsetting. But anyway, I had taken the choice myself. And my crowning glory was that after the premiere, they had a party. He didn't go to the party. He came straight to my house. He bought a bottle of whiskey with him. And he said, for me, the party is here. Why do I need to go there? And then from there he left. Then after that, Dabuzam and Pancham, and suddenly I had about 100 people in my house. And but his coming was the most touching thing which happened. And he gave me very valuable contributions in Betar after seeing the movies. And Arjun, he was very enamored by. In fact, Arjun was one film where when he saw it, he stopped it in between. I don't know if you guys remember Arjun or not, but the scene where you realize that Anupam Kher has been taking Sunny for a ride. Till then he was an honest politician. So Raj Sahab stopped the film and he said, this is something I never imagined. It's the best moment I've seen in film. And leave the print with me. I'll see the film. And he saw the film about 4 times. And when I was shooting Arjun, there was one small thing which was his suggestion. She's coming with motivation. तो वो मैं सेट लगा हुआ था राजकमल स्टूडियो में, तो सेट लगा था पूरे जो सनी का घर था, बच्ची थी, तो राज साहब आए थे कुछ और काम से स्टूडियो में, तो उन्होंने देखा सेट लगा, तो बोले मिल लेता हूँ, तो मिले, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि Bombay has this thing of BST buses. We have these red colored buses, BST buses. So he asked me, he said कि I told him, I said me ये है. So he said वो BST bus कहाँ से आएगी? So I said, sir, BST bus. He said, देखो Rahul, if you are saying this is a street in Bombay, if you want people to believe it, they'll only believe it if they see a BST bus. And he was so right. So in the film we actually had a BST bus at places coming around. So these inputs were very, very. सब critics ने ये पूरे inputs दिए थे आपके अर्जुन पे, तो के detailing पे. On the detailing, and there's one thing. Audience would like to ask some questions. Anybody? Yeah. Haan. नमस्कार, मैं विजय कपूर हूँ। मुझे ये जानना है कि वो क्या चीज़ थी जो राज कपूर को सबसे बड़ा शोमैन बनाती है आपके नजरिए से? मेरे हिसाब से शोमैन का पता नहीं, लेकिन एज अ फिल्म मेकर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शो में इसलिए यही कहा जाता है, ये कहते थे क्योंकि उनकी पार्टीज होती थी, उनका एक लार्जर देन लाइफ रहते थे वो इसलिए शोमैन कहते थे। बट मेरे को लगता है ही वाज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर वी एवर हैड, क्योंकि फिल्म मेकिंग के बारे में 360 डिग्री ही हैड कंप्लीट नॉलेज, व्हिच आई डोंट थिंक आई मेट एनीबॉडी हु गॉट दैट नॉलेज। दूसरा प्रश्न ये है, आपने जितनी भी फिल्में बनाई, वो जितनी फिल्मों के नाम अभी लिए गए, मैंने सोचा ये जान पाया कि आपने ज्यादातर उनमें स्टार सन्स या स्टार डॉटर्स या कोई सेलिब्रिटी रही, स्टार खास वजह इसकी? देखिए, एक तो मैंने बनाई थी लव स्टोरी, और वीरेंद्र कुमार के बेटे के साथ थी। मेरे लिए उस टाइम पे नया था, तो इट वाज अ ब्रेक, आई कुड नॉट से नो, बी स्टूपिड इफ आई सेड नो। फिर मैंने बनाई बेतार, धर्मेंद्र के बेटे के साथ। उस टाइम पे था क्योंकि लव स्टोरी मेरा नाम नहीं आया था, तो आई वॉज विदाउट वर्क कम्प्लीटली। तो फिर मुझे धर्मेंद्र ने जब बुलाया, कहा कि मेरे बेटे की फिल्म कर लो,
तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। उसके बाद की फिल्मों में कोई स्टार सन्स थे नहीं। स्टार डॉटर्स नहीं, काजोल वाज नॉट स्टार। काजल के लिए मैं गया था काजल के भाई की बेटी का ऑडिशन देखने के लिए, एंड काजल वाज देयर एट ऑल। वी वेंट फॉर द ऑडिशन ऑफ ब्रदर्स। काजल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग एट ऑल। और तनु के पास जो बुरा बनवा उन्होंने काजल, शी सेड यू आर मैड, काजल विल नॉट बी एबल टू वर्क। सो काजल हैड नो कनेक्शन विद एट ऑल। ऐश्वर्या राय Aishwarya Rai was Miss World, very pretty, but let's not talk about her. मैं सिर्फ इसलिए कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज रहे हैं आपके साथ जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया जो ऑलरेडी फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से बात थी, बस इतनी सी बात। बहुत धन्यवाद। I don't need the mic. Yes, you are. So I wanted to ask you a little question about Mr. Shashi Kapoor. I know the syllabus is Mr. Raj Kapoor, but do you have an anecdote on Mr. Shashi Kapoor, your impression of him, your friendship with him? He's my favorite. Okay. See, Shashi uncle was somebody we never got. He was very close to us, but never got close in the way I was close with Raj. And there was no anecdote with him because he himself was so scared of Raj that in front of him he would not say a word. They were all very scared of him. They had brothers. Scared of him. The only good thing about Shashi uncle was that when we were shooting in Pune for Satyam Shivam Sundaram, at night after shooting, he would take us to the city for dinner every night. Which was very rare that somebody is taking us for dinner. So he was a great person that way. Thank you. Anybody else wanting to ask a question? आपने अभी बताया कि आप राज कपूर जी के साथ आपने ज़िंदगी बिताई इतनी लंबा अरसा, और उनकी क्वर्कीनेस के बारे में आपने बहुत लंबी बात की, काफ़ी ज़्यादा उनके इंसिडेंट सुनाए। डिड इट रब ऑन टू यू? कोई ऐसा इंसिडेंट, द क्वर्कीनेस, डिड इट रब ऑन टू यू उनके साथ रहते रहते? कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने कोई क्वर्कीनेस की हो? की होगी, पक्का की होगी। तो वो बताइए, हमारे से शेयर कीजिए। मुझे तो नहीं लगता नहीं कि लोग बोलते कि तो आई डोंट थिंक असिस्टेंट को हम बुला के हाँ उनको वो बोले I know people say that I am a little so it rubbed on to you, a little short-tempered I am. There's no doubt about that. But people say there are funny stories about me. Some people say that Raul has a habit of slapping his heroines. I've never slapped. I have almost slapped, I guess. There's a difference between slapping and almost. I've almost slapped him. The worst I've done with a heroine, and this only when they're not paying attention to her, is picked up a heroine and thrown her into the sea. I've done that. I won't deny it. So, we are happy we are not the hero. But I've not slapped anybody, so I shouldn't say I've slapped somebody. I've never done that. Thank you. I wanted to know, you have given a break to so many people in the industry. वो आपको याद रखते हैं, वो आपको आपके शुक्रगुजार रहते हैं कि भूल जाते हैं? Director is so powerful, he's giving you a life. देखिए, I understand what you're saying. There's a person like Kajal. जी. If today I walk into a room where Kajal is there, she will stand up. And she will not sit till I am there with her. So will Sunny. They will not do it. But I can't say this about everybody. These are two people I can say that this time. Thank you, that made me happy. तो मैं दो बातें पूछना चाह रही थी कि एक तो आपके फादर जो एच.एस. रवेल थे, उनके अकाउंट में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, क्या उनके बारे में भी आप कुछ लिख रहे हैं ताकि अगली जनरेशन्स को पता हो उनके बारे में?
देखिए, और दूसरा सवाल कि राज कपूर के लिए आरके स्टूडियो क्या था, एक वो जो इमोशन था, और जब अब आरके स्टूडियो नहीं है, अगर वो आज होते तो आपको क्या लगता है, क्या उनके होते उसके बिकने की बात आती या इस तरह की चीज़? देखिए, जहाँ तक मेरे फादर से उनके बारे में आप पूछे थे, प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर जो फिल्म मेकर थे, मैंने काम करना शुरू किया राजा के साथ जब मैं 15 साल का था, तो आई हैड नेवर स्पेंट सो मच टाइम विद हिम, सो आई कैन टेल यू आई हैव सीन हिज फिल्म्स, दैट्स इट। राजा के लिए आरके स्टूडियो जो था वो तो उनकी ज़िंदगी वो स्टूडियो के अंदर थी, उन्होंने बनाई भी वैसे थी, और जल गया उसका रिएक्शन आप बोल रहे हैं, ही वुड बीन वेरी अपसेट, ऑब्वियसली वी वर ऑल वेरी अपसेट, बट ही वुड बीन वेरी वेरी अपसेट। जो जितना सामान था, उनकी फोटोज थी, उनके कॉस्ट्यूम्स थे, वो सब चल गए थे। दैट वॉज वेरी अपसेटिंग। एंड जहाँ तक बिकने का सवाल था, दी बॉयज नो ऑल्टरनेट बट टू सेल इट, बिकॉज स्टूडियो चल नहीं रहे थे बॉम्बे में, स्पेशली आरके को आता नहीं था, और खर्चा बहुत था, सो इट वॉज गोइंग, द एक्सपेंसेस वर गोइंग वे अहेड ऑफ द इनकम, सो दैट वाज इट। Anybody else? Yeah. So sir, I wanted to ask you, like you have introduced names like Kajol and Ashwara, and like mentioned before, now that they have like achieved so much, and I mean we can see Kajol trying out diverse roles. So how do you feel about that? Because you've watched them grow. I'm very happy when I see them. I'm very happy when I see them because somewhere that having nurtured them and having reached this, I think that is the greatest happiness you get. And sir, I wanted to talk about about your movie Bekhudi. At first, Saif Ali Khan was casted for the role, but afterwards he was replaced. So why did you think that Saif Ali Khan was not? See, Sam, I started shooting with him. I shot about 10 days with him, but he was very irresponsible. The problem was irresponsible. I was shooting, he didn't turn up to the shooting, and nobody knew where he was. So I said that 10 days के बाद ये है, तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा. And I spoke to his mother. And she said yes, he is irresponsible. He was very irresponsible. But maybe my replacing him in the film got him out of the responsibility. Maybe that was a contribution there. But otherwise, I was very confident that he'd be a good actor. Thank you, sir. Thank you for the lovely question answer session. अब हम दो best questions को select करेंगे. So please, Alka ma'am, yeah, we would like sir ये present करें. थैंक यू। जो दूसरा प्रश्न है शायदा बानर्जी का, बहुत इंटरेस्टिंग था. अब मैं रंजना मैम को स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर को फेलिसिटेट करें. थैंक यू सो मच. रंजनागढ़ की ओर से मैं शर्मिता भिंडर आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे अतिथि राहुल रवैल जी और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली दीपिका भल्ला का भी. हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज चंडीगढ़ की भी आभारी हैं.
अब हम चाहेंगे कि राहुल जी बुक्स को साइन करें।